monarchical dictatorial rule. It was a symbol of monarchical dictatorial rule. Bastille Fort was a symbol of monarchical dictatorial rule. ये symbol था monarchical dictatorial rule का. Okay, and why I am saying this? Because when Louis XVI was ruling, when the absolute monarch is ruling, those who were advocating the progressive ideas, उनको क्या किया जाता था? They were arrested and put in this prison. That's why this was the symbol of conservative order. जो भी प्रोग्रेसिव आइडियाज की बात करेगा, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म का विरोध करेगा, दैट पर्सन विल बी पुट इन दिस प्रिजन. दैट्स व्हाई दिस इज द सिंबल ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म. बास्टील फोर्ट. तो जब रिवॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? सिंबल्स पे अटैक किए जाते हैं. दिस वाज द सिंबल, बास्टील फोर्ट. So what happened? The third state representatives, supported by thousands of people, attacked this Bastille fort. भाई गुस्सा आया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है. Then what they did? Read this. The third state representatives, along with thousands of people, attacked this Bastille fort and established control over it. That is known as storming of Bastille. Okay, they attacked this Bastille fort and established their control. What they will do? They will let the prisoners released. सभी कैदियों को आजाद कर देंगे वो. And then this was the place where arms and ammunitions were also kept. So will they establish control over the arms and ammunitions also? Yes, they will also establish the control over arms and ammunition. So what happened here? Prisoners were released. The prisoners were released and they also established control over what? Arms and ammunition. Prisoners were released and they also established control over arms and ammunition. This happened. Prisoners were released and they established control over arms and ammunition. Okay. King was sleeping in his palace. King Louis XVI. Okay, so one of his servant came and said that, Sahab, what has happened? Okay, king is asking, what has happened? Is this a revolt? The servant said that the people had stormed the Bastille. Bastille पे कब्जा कर लिया लोगों ने. The ruler asked, is it a revolt? And the servant said, no sir, this is not a revolt. This is a revolution. बताओ, लुई 16 के सर्वेंट को भी पता था व्हाट इज रिवोल्ट एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन. अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन. नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स. ठीक है, व्हाट इज रिवोल्ट? देखो, कोई ऐसा एस्टैब्लिश डेफिनेशन तो नहीं होता, बट लुकिंग एट द ट्रेट्स और द फीचर्स वी मेक आवर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज मूवमेंट. रिवोल्ट, रिवॉल्यूशंस एंड मूवमेंट. ठीक है, मैं ये क्वेश्चन उनसे, यस, बढ़िया है. ये तो हिंदी मीडियम की क्लास में बताना तुम. मतलब बढ़िया, ये तो बढ़िया डेफिनेशन दिया तुमने. लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता. व्हाट इज विद्रोह एंड क्रांति? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट? ठीक है, गिरीश बताओ. You can answer, you all can answer. इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको है, but try to give answer. मतलब आपका ये कहना है कि ये exactly means you want to say that this concept is more wider. ठीक है, it encompasses varied range of issues. ये बात आप कहना चाहते हैं, ठीक है ना? And you are saying that it addresses a single particular issue, or you can say that minor issues. ये आप कहना चाहते हो. ओके, अच्छा, दूसरा कोई और, some other student? Exactly, means आप Shinam wants to say that when we talk about revolt, okay, so some particular groups or classes are a part of it.
and when we talk about the revolution, it is supported by, okay, a large segment of people, ठीक है, many groups, multiple groups. So she is talking about on the basis of, so her parameter is mass participation. Here mass participation is low, here mass participation is high. Any other person? आप फीचर्स बताओ, देन आई विल डिस्कस द डेफिनेशन. होता क्या है, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट. और कुछ? चलो मैं बता. एग्जैक्टली, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट रिवॉल्यूशन, so here we talk about the radical changes, those radical changes which are going to bring a change in the entire political system, economic system and all this. ठीक है, that is a good point. ठीक है, now on the basis of what you have discussed, I am going to define these two terms. okay, revolt and revolution. क्या है revolt and revolution? तो देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि when we talk about revolt, okay, and when we talk about the revolution, so the root cause or genesis of revolt is what? Dissatisfaction. डिससेटिस्फेक्शन से ही ये होगा, राइट? रिवॉल्यूशन का भी क्या है? रूट कॉज और जेनेसिस इज व्हाट? डिससेटिस्फेक्शन. द रूट कॉज और जेनेसिस इज व्हाट? डिससेटिस्फेक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज डिससेटिस्फाइड? नाउ द क्वेश्चन इज हु इज डिससेटिस्फाइड? डिससेटिस्फाइड कौन है? हु इज डिससेटिस्फाइड? दिस इज वन क्वेश्चन. ठीक है, डिससेटिस्फाइड कौन है? okay, suppose one group or one class is dissatisfied, two group, three group or three classes are dissatisfied. It means if it's spread among a small size of population, that may be revolt, and if it is spread over larger groups, that's a revolution. This parameter you already have discussed, that looking at the mass participation, we can also, okay, define revolution and revolt. If mass participation is low, if it is supported by, you can say that small group, if it is supported by large group, if it is supported by all people, masses, so that is a revolution. तो फ्रांस में जो हो रहा था, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? कॉमनर्स. और कॉमनर्स का पॉपुलेशन कितना था बताओ? 95 to 97% पॉपुलेशन. तो इन दैट केस व्हेन यू विल यूज पैरामीटर that इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, तो हियर 95% पॉपुलेशन वाज सपोर्टिंग दिस. तो ये क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई से मुंडा ट्राइब रिवोल्ट इन इंडिया, यानी ये रिवोल्ट किसका है? दिस इज रिवोल्ट ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप. और ट्राइबल ग्रुप में भी दिस इज नॉट द रिवोल्ट ऑफ ऑल ट्राइब्स, दिस इज द रिवोल्ट ऑफ मुंडा ट्राइब. मेरी बात समझ गए? तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं रिवोल्ट्स एंड रिबेलियन. गॉट इट? एंड दूसरी तरफ क्या है? revolution. Now the second important point here is that this revolt is often, जैसे यहाँ पे बस आप इतना ध्यान में रख लो, मुंडा रिवोल्ट, ठीक है, मुंडा ट्राइब रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट, ठीक है, अहोम ट्राइब्स रिवोल्ट. ये एग्जांपल आप मॉडर्न इंडिया के ध्यान में रखो, अहोम ट्राइब्स रिवोल्ट, आप समझ जाओगे. अभी 1857 का रिवोल्ट मत बोलना, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा वो क्या था. ठीक है ना? मुंडा ट्राइब रिवोल्ट, अहोम ट्राइब रिवोल्ट एंड ऑल दिस. नाउ these revolts are, right, this, उनमें एक जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर होगा कि दे विल बी सडन, अचानक होगा. सडन आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट. सडन आउटब्रेक मीन्स व्हाट? दिस इज नॉट प्लान्ड. ये प्लान्ड नहीं है. दिस इज नॉट प्लान्ड. सडन आउटब्रेक मीन्स इट्स नॉट प्लान्ड. ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, अगर एक दिन अनाउंस किया, अगले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया. Okay, so this is what? Not planned. This is unorganized. It's spontaneous. It's spontaneous. Spontaneous. It lacks strategy, coordination. It lacks strategy. It lacks coordinated efforts. It lacks strategy. It lacks coordinated efforts. Okay. एंड इट्स शॉर्ट लिव्ड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि ये कई साल तक चलेगा. दिस इज ऑल्सो वन फीचर. दिस इज शॉर्ट लिव्ड ऑल्सो. दिस इज शॉर्ट लिव्ड ऑल्सो. Okay, this might be possible that the revolt can bring some change, but this change will be minimum change or minimal change.
ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बदल जाएगी. So this might be possible that the revolt will be successful in bringing change or will not be successful in bringing change. दोनों हो सकता है कि रिवोल्ट होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी हो सकता है. रिवोल्ट होगा तो चेंज आ भी सकता है. रिवोल्ट कैन ब्रिंग चेंज ऑल्सो, बट दिस चेंज विल बी व्हाट, मिनिमम और मिनिमल चेंजेस. ठीक है, रिवोल्ट विल ब्रिंग व्हाट, minimal changes. It's short lived, it's unorganized, it's planned, it's spontaneous. ठीक है, got this idea? नहीं, मैं बताऊंगा अभी. मैंने कहा रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अ डिफरेंट केस, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में. अभी आप जनरल मीनिंग समझ गए रिवोल्ट से. आई विल डिस्कस रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका भी जिक्र करूंगा. राइट, दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक ना. तो अच्छा देखो, एक्सेप्शंस विल बी देयर, इसके एक्सेप्शंस भी होंगे. हो सकता है कि देयर इज अ रिवोल्ट विच इज नॉट शॉर्ट लिव्ड, दिस माइट बी पॉसिबल. तो एक्सेप्शंस मे बी, ठीक है ना. तो दिस इज नॉट लाइक दैट कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ऐसा नहीं है. कोई एक दो पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट ये पैरामीटर नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा. पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, दिस विल ऑलवेज बी लो. अब आप इसमें आ जाओ. तो फर्स्ट पॉइंट अ स्टूडेंट सेड इज दैट wider version, it encompasses wide range of issues. So write this, it will encompass what, wide range of issues. So this is what, a wider version. This is a wider version. Now tell me, in French Revolution, it encompasses of one issue or multiple issues? The idea, multiple issues. ठीक है, देखो वोटिंग राइट्स को चेंज करना, दिस वाज द इमीडिएट रीजन, बट इट वाज हैविंग मल्टीपल इश्यूज. मल्टीपल इश्यूज थे. ऑर्थोडॉक्सी प्रोमोटेड बाय द चर्च, चर्च अथॉरिटीज का ऑथोरिटेटिव बिहेवियर, देयर वाज एब्सोल्यूटिज्म, देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रूल. तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं. मेरी बात समझ गया ना. So this is one point. It will include wider system based privilege. दो privilege based system जो है इसका अपोज करना था, तो ये भी तो एक पॉइंट हो गया ना. एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, ओके, participation of the masses. So it will be supported by large group of people, and the most important thing is that it will be capable of bringing radical changes. Radical changes, and these changes are what, okay, the changes in political system, the changes in system of administration. This will also bring change in religion. This will also be capable of bringing changes in society. ठीक है, सब कुछ बदल के रख देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है, तो this will be capable of bringing changes. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो ऑब्जेक्टिव कुड बी ओवरथ्रोइंग अ रूलिंग गवर्नमेंट. रशिया में जो हुआ वो क्या था? रेवोल्यूशन. अमेरिका में जो हुआ क्या था? रेवोल्यूशन था. ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई, दैट वाज रिवॉल्यूशन, दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट. रशिया में क्या हुआ? मोनार्कियल सिस्टम, रोमानोव डायनेस्टी रूल वाज एंडेड, एंड फर्स्ट टाइम एन आइडियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, वो रेवोल्यूशन. फ्रांस में क्या होगा? ओके, मोनार्कियल सिस्टम विल बी एंडेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विल कम. ये है रेवोल्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आना, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है. रिपब्लिक विल नॉट बी इंट्रोड्यूस जस्ट आफ्टर दिस, बट द सिस्टम विल चेंज. मोनार्की की जगह क्या आ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो यू कैन राइट हियर दैट, ओके, चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम और चेंज इन गवर्नमेंट. ओके, अच्छा बताओ, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा कि नहीं? दिस विल बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. मैंने पहले ही बताया कि यहां पे लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, बताओ. Why the people assembled here in tennis court? डिस्कस किया ना उन्होंने. ओके, सो राइट दिस, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. इट्स अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. इट्स नॉट as spontaneous, it's planned. It's not as spontaneous, it's planned. Okay, it's planned. अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट अबाउट वायलेंस, of violence in revolt and use of violence in revolution. Will there be use of violence in revolt? Is it a possibility? हाँ होगा. अब गुस्सा आ गया मुझे तो मैं किसी का सर फोड़ दूंगा. ठीक है, गुस्सा अचानक आता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट दिस इज जस्ट एग्जांपल. इन रिवोल्ट्स, फॉर एग्जांपल इन मॉडर्न डे व्हेन यू विल रीड
tribal revolt, peasant revolt, everywhere you will find that the tribals were using their traditional methods of warfare. ठीक है, वो तीर धनुष लेके भिड़ जाते थे, bow and arrow, with bow and arrow and spears they were fighting with the colonial rule. So use of violence, yes, this can be seen in revolt, and use of violence, yes, this can be seen in revolution also. यहाँ भी use of violence हो सकता है. बास्टील फोर्ट में प्रिजन अथॉरिटीज को किल किया गया, प्रिजन अथॉरिटीज वेर किल इन द बास्टील फोर्ट. ठीक है, और आगे चल के तो लुई 16 को भी गिलोटिन पे चढ़ा देंगे, गला काट देंगे उसका. दिस ऑल्सो विल बी हैपनिंग इन द फ्रांस. So use of violence is an important part here. Now, okay, the next important point. The third is what? अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बता दूं idea that we will discuss in modern Indian history. In modern Indian history, there was a very famous revolt, and that is what? Revolt of 1857. याद रखना इसको, Revolt of 1857. Now there is a debate about this revolt, that this revolt, for example, there are different opinions regarding this revolt. The colonial historians will try to demean this revolt, because अगर revolt होगा तो revolt कहीं ना कहीं it shows the failure of the British. The colonial historians will try to demean this revolt, okay, and they will say that it was only a sepoy mutiny. They say that it was only a sepoy mutiny. ये केवल sepoy mutiny था. It was a revolt, that is revolt of 1857. It was only a sepoy mutiny. But when you will read this topic, you will find that yes, sepoys started this mutiny, but later this revolt was supported by large group of people. Sepoys started, but later it was supported by large group of people. Sepoys started, but it was supported by Bahadur Shah Zafar also, who was the ruler. It was supported by peasants also, right? It was supported by zamindars also, okay? It was supported by traditional artisans also. It means there were various groups who came in support of revolt of 1850. तो ये बात तो गलत हो गई. It was not only a sepoy mutiny, right? And what was the ultimate objective of the ultimate objective of the people who supported this revolt? So they wanted to overthrow the British rule. ये बात तो अच्छी है. They wanted to overthrow the British rule. They wanted to overthrow the British rule. This objective can be validated because British rule was a symbol of colonial rule. ये बात सही है. But at the same time, what is the objective of the sepoys here, or those people who were supported revolt of 1857? They wanted to bring back the Mughal rule. They wanted to reinstall the Mughal power. And this is progressive or regressive? Tell me your opinion. Regressive है भाई. This is 19th century. दुनिया एज ऑफ एनलाइटनमेंट में चल रही है और आप कह रहे हो कि हम मुगल रूलर को लाएंगे. और मुगल रूलर क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ मेडिवलिज्म. ही इज अ मोनार्क, ही इज अ एम्परर. वो डेमोक्रेसी नहीं है. So in 19th century we should fight for democracy, and here what we see is that the people are demanding that we are going to bring back Mughal authority. This demand is regressive. So this is the limit of this revolt. यहाँ पे objective जो है, objective becomes regressive. ये progressive नहीं रह जाता है. This is regressive, that they want to bring back the Mughal rule. Bring back the Mughal rule. And this is the reason that educated Indians remained neutral during the revolt of 1857. Educated Indians neutral रहते इस revolt में. ठीक है. इसके बाद देखो क्या, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है. Now there are different debates here, but ultimately what should be opinion? It's a balanced opinion. And what is this? देखो, हम इसको केवल sepoy mutiny कह नहीं सकते. It's not proper to say it a mere sepoy mutiny. Only sepoy mutiny कह सकते हो क्या? केवल sepoy mutiny तो नहीं था. Okay, but some historians say that this was the first great war of India's independence. भारत की आजादी का पहला संग्राम. First great war of India's independence. अगर हम कहते हैं फर्स्ट ग्रेट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि was were we fighting the first great war of India's independence to bring back the Mughal rule?
क्या हम भारत की आज़ादी का पहला संघर्ष मुगल शासन को वापस लाने के लिए लड़ रहे थे? वे वी फाइटिंग फॉर दिस, ब्रिंग बैक द मुगल रूल. सो दिस इज व्हाट limit, and that's why it is more proper to say that it was more than a mutiny, it was more than a revolt, but less than the first war of Indian independence. तो ये इसका आंसर होगा. Write this. Revolt of 1857 was more than a mutiny, but it was less than the first great war of India's independence. It was more than a mutiny, but less than the first great war of India's independence. ये mutiny से ज्यादा था और first great war of Indian independence इससे थोड़ा कम था. ऐसा कह के हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, because this is a debatable topic. I hope you have understood the difference between revolt and rebellion. समझ में आया गिरीश? थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ना? ठीक है. अब एक और वर्ड है मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया में डिस्कस करेंगे. मैंने इसीलिए ये दोनों मॉड्यूल्स एक साथ शुरू किए थे. ठीक है. द रीजन वॉज दैट आप चीज़ों को क्या कर लोगे, इंटरेक्ट करके समझोगे. ठीक है. एक दो बच्चों ने मैसेज किया था ऑप्शनल के लिए, तो अगर आपने जीएस की क्लासेस मेरी ठीक ढंग से पढ़ ली और उसके बाद ऑप्शनल किया, तो ये मतलब एक बहुत ही शानदार डिसीजन होगा. ठीक है. पहले नहीं. हिस्ट्री ऑप्शनल कभी मत लो बिना जीएस पढ़े हुए, नहीं तो खतरा हो जाएगा. जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ. ठीक है. If someone convince you that take history optional it will cover all GS, this is not true. Because GS में ज़्यादा पढ़ना है और वहाँ पढ़ने का अप्रोच अलग है, ऑप्शनल में अप्रोच is completely different, पूरी तरह से अलग है. When you will know better general studies, you can write effective answers in mains and that too without making more efforts. आप आसानी से अपना काम कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना है. आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है. अगर आपका प्लान मैं बनाऊंगा तो मैं आपका प्लान बाजार की डिमांड्स के अकॉर्डिंग बना दूंगा. ये बाजारवाद है, हमेशा याद रखो. ठीक है. एवरी पर्सन इज रनिंग आफ्टर द मनी. बी केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर. you should take your own decisions. That is the most important thing. Now the third word is what? Movement. Write this. The third word is movement. And what is the movement here? Movement हम पढ़ेंगे. For example, in modern India we will read about Swadeshi movement, we will read about non-cooperation movement, we will read about civil disobedience movement, we will read about quit India movement. ठीक है. तो movement क्या है? Movement is a passive way. It is a passive way to resist an oppressive structure. Passive way to resist an oppressive structure. Passive way to resist an oppressive structure without using violence. Clear? This is what? Without using violence. That is the most important thing. Without using violence. This is the core issue. Without using violence. This is a passive way to resist any oppressive structure without raising violence. For example, if I had to oppose something, for example, there was Henry David Thoreau, okay, and he was opposing the system of slavery that was validated by the American government after American War of Independence. कहा ये क्या है भाई, हम independence हो गए and slavery is validated by law, and he opposes slavery and he says that when state law and your moral law both comes in a state of conflict, and if you know that my moral law or my moral conscience, okay, it's supporting a valid truth, okay, any demand that is for justice, in that case you should go with your moral law. You should not follow the state law, and what will happen in that case? The state may put charges against you, the state may put you in the prison, but you should be ready to go to the prison, because once you go to the prison for a right cause, you will gain the sympathy of the people, and when you will gain the sympathy of the people in the favor of your demand, the people will come. The people will come to support you, and in this way can gain the support of the masses for a right cause, and that is a passive way to resist an oppressive structure. And Gandhi learned the same technique from Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, okay, wrote an essay on civil disobedience. He says that if the state law is not in sync with your moral law,
disobey the civil law. Civil law को disobey करो. Henry David Thoreau says Gandhi adopted disobey the civil law. Civil disobedience movement, salt satyagrah. Gandhi did what? Gandhi break salt law. Non-payment of revenues was also a part of civil disobedience movement. So this is what Gandhi learned from Henry David Thoreau. This is the movement. This is a passive way to resist an oppressive structure. Got it? We are gathering the support of the masses for a cause, but there will be some exceptions. इस definition का भी कुछ exception हो सकता है. जैसे कि when you will read modern India, what you will find? Quit India movement. Tell me, use of violence or no use of violence? This is a prelims question. This is a prelims question. The statement was, Quit India movement was completely non-violent in nature. Correct or incorrect? ये prelims का question है. Completely non-violent? नहीं. देखो इसीलिए मैं कहता हूँ टॉपिक को ध्यान से समझो. मेरी क्लास में डिस्कशंस को सुनो. क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हेन आई विल टीच यू, आई विल टेल यू दैट इन इनिशियल स्टेज क्विट इंडिया मूवमेंट देयर वाज नो यूज ऑफ वायलेंस, बट व्हेन द ब्रिटिश used brutal means of suppression, in that case some sorts of limited violence were there. तो क्विट इंडिया मूवमेंट में लिमिटेड वायलेंस है. इट्स नॉट वायलेंस, इट्स अ लिमिटेड वायलेंस. तो अगर स्टेटमेंट ये लिखता है कि इट वाज कंप्लीटली नॉन वायलेंट, सो इट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, इसमें क्या था? लिमिटेड वायलेंस था. क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था? ऑलवेज यूज दिस वर्ड लिमिटेड वायलेंस. हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्लियर? रिवोल्ट, revolution and movement आगे भी डिस्कस करेंगे. we'll discuss the meaning. So we were discussing this event, okay, fall of Bastille. Got it? So fall of Bastille is what? Beginning of